बंधूंनो, भगिनींनो आणि मित्रांनो, मी रवींद्र चौधरी आपणा सर्वांना अभिवादन करीत आहे। आज आपण श्री दुर्गा सप्तशतीमधील 6व्या अध्यायाचे पठण करणार आहोत। हरिः ओम। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। ओम नमः चंडिकायै। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत्तम सुरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकर निभां नेत्रतयोद्भासितां माला कुंभ कपालनी रजकरां चंद्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांक नीलायां पद्मावतीं चिंतये। ओम ऋषिर्वाच इत्याकर्णवचो देव्या सदूतो मर्षपुरीतः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्य मार्कण्यासुरराट ततः सक्रोधप्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलादृष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्प्राणद कश्चिद्यतिवोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिर्वाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः कृतषष्ट्या सहस्राणां सुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चै प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः। न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारम् उपैष्यति ततो बलान्नयामेष केशाकर्षणविह्वलां। दिव्यवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिर्वाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावतामसुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्मसा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः। ततो धूतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांशितकरप्रहारेण दैत्यानासेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केशाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठा दन्येषां धूतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन कैसरिणा देव्या वाहनेनातिकोप्यना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः। चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ। हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समान्यतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि व संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैर्सुरैर्विनिहन्यताम्।
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। झालेली सेवा श्री दुर्गा मातेच्या चरणी समर्पण करीत आहे। हे देवी, पाठ म्हणताना माझेकडून चुकीचे उच्चार झाले असल्यास मला क्षमा कर। क्षमस्व अपराधम, क्षमस्व अपराधम, क्षमस्व अपराधम। मी रवींद्र चौधरी आपणा सर्वांना नम्र विनंती करतो की आपण माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करून लाल घंटीचे बटन दाबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।